इस लेक्चर का टॉपिक है डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगर हम आइडियल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें तो आइडियल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वो ऑसिलेटर होगा जो अपनी ऑसिलेशंस को फॉर इनफिनिट पीरियड ऑफ टाइम सस्टेन करेगा और उसमें कोई रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं होंगी। यानी उसकी जो ऑसिलेशन है उसको डैम्प करने वाली कोई भी रेजिस्टिव फोर्सेस मौजूद नहीं है सिस्टम में या सराउंडिंग्स में, जिसकी वजह से उसकी जो ऑसिलेशन है वो इन्फिनिटली कंटिन्यू रहेंगी। बट इफ वी टॉक अबाउट डैम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर तो ये रियल लाइफ ऑसिलेटर होता है जो कुछ देर बाद अपनी ऑसिलेशंस को स्टॉप कर देता है। तो इट इज ड्यू टू द रीजन दैट यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली रेजिस्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं और ये रेजिस्टिव फोर्सेस जो होती हैं ये स्लोली जो ऑसिलेशंस हैं उनको उनका एम्पलीट्यूड डिक्रीज करती चली जाती हैं, बिकॉज ये जो फोर्सेस होती हैं इनकी वजह से सिस्टम के अंदर कंटिन्यूसली एनर्जी डिसिपेशन हो रही होती है और उसकी वजह से इसकी ऑसिलेशन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम डैम्प हो जाएगी और स्टॉप हो जाएगी। तो इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव और फ्रिक्शनल फोर्सेस, नॉर्मली ये जो रेजिस्टिव फोर्सेस हैं दे आर डेफिनेटली फ्रिक्शनल फोर्सेस इन द सिस्टम। और ये जो इन फ्रिक्शनल फोर्सेस को अगर हम कंसिडर करें तो डेफिनेटली दे विल एक्ट टू डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। यानी ये ऑसिलेटर की वेलोसिटी पे एक्ट करेगी और उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी और विद द पैसेज ऑफ टाइम फाइनली इट विल बिकम जीरो ओवरऑल और जो एम्पलीट्यूड है वो भी इसका जीरो हो जाएगा। मींस कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम it will stop oscillating. So if we talk about the equation of motion of a damped oscillator, तो it is equal to mx double dot, यानी F is equal to ma, न्यूटन सेकेंड लॉ की बात हम कर रहे हैं। और आपको पता है कि it is equal to the restoring force for the case of mass spring system. If we talk about a mass spring system, placed on a rigid surface और यहाँ से frictional forces जो हैं वो rise हो रही हैं और इसके ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज F इज इक्वल टू माइनस एस एक्स। एस इज द स्टिफनेस इन द स्प्रिंग और द फोर्स कांस्टेंट एंड एक्स इज द पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट from the equilibrium position, and this is the block of mass m. So this is a mass spring system जिसके लिए हम ये इक्वेशन लिख रहे हैं। तो इसकी जो फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स है ड्यू टू विच इट एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, and we will add the resistive force into it, and that resistive force is equal to gamma x dot. Now what is gamma x dot? It is a damping factor, and this is the frictional force, and frictional force in this case is defined as, this is a frictional, and it is defined as gamma, which is F over x dot into x dot. So it acts to reduce the velocity of the system. So it is a force per unit velocity that is known as gamma is the damping factor. Okay. So once we define the equation of motion of a damped oscillator, now our next task would be to find a solution for this particular equation.
And we propose a trial solution for that. And that trial solution is, suppose that its solution is, the solution of this equation of motion is CE alpha t. It is uh, of this form. Okay. So now, in order to satisfy this equation, we will differentiate this solution, this x, which is the proposed root of this equation of motion, to be, first derivative is C alpha E alpha t, and obviously the double derivative would be the acceleration, and that would be C alpha square E alpha t. So now if we put these values in equation 1, that is the equation of motion, it would be mc alpha square E alpha t minus s c E alpha t minus gamma C alpha E alpha t. And this is, we can rearrange all these values to be m c C alpha square E alpha t plus SCE alpha t plus gamma C alpha E alpha t, and we make the right hand side equal to 0, and we take out the common, and the common term is C in all the terms, E alpha t, and then the term left in bracket would be m alpha square plus, let's rearrange it like that, gamma alpha plus S. Now, obviously, either CE alpha t equal to 0 or M alpha, while CE alpha t equal to 0, this is trivial, or M alpha square plus gamma alpha plus S equal to 0. So putting the second term equal to 0, we can find out what this alpha is. This is a quadratic equation, and we can convert it into standard quadratic equation by dividing both sides with m. And later on, we will prove this alpha is equal to the angular frequency of the system. It means it has the dimensions of the angular frequency, or you can say that it has the dimensions dimensions equal to 1 over t. Okay. Now this is a quadratic equation, and we will solve this by using quadratic formula. And by solving it using quadratic formula, alpha would be equal to minus b Please note down, this is alpha square, this is R over M alpha, minus b plus minus b square minus 4ac over 2a. Now b is gamma over m, so it would be minus gamma over m plus minus gamma over m
whole square plus 4, A is 1, C, S over M. Over 2 into 1. So this would be minus gamma over 2m plus minus gamma over 4m. This 2 will be will go as the denominator for this term, and inside the root it will become double. So it will become 4 and will become the denominator of all the terms. So we will write it like that. Four over 4 S over M. So it will be cut like that. So now we get the roots of alpha to be minus gamma over 2m plus minus gamma square over 4m square minus S over M. So all the three terms means gamma over 2m has a dimension equal to 1 over S square. This can be proved. Similarly, gamma square, ये जो अंदर वाली term है, and R over 2m, obviously, gamma over 2m, that is equal to 1 over S, and S over M, you already know that it has this is the frequency, angular frequency of mass spring system, and it already has the dimensions of 1 over S square. So this can be proved as well that alpha जो है उसकी जो dimensions हैं वो angular frequency की होती हैं, means के ये इस तरह से लिखा जा सकता है, ये भी इस तरह से लिखा जा सकता है, and ये इस तरह से लिखा जा सकता है. ओके, अब हम अल्फा के दो रूट्स को डिस्कस करेंगे. अल्फा का जो पहला रूट है वो है आर ओवर gamma ओवर माइनस gamma ओवर 2m प्लस gamma स्क्वायर ओवर 4m स्क्वायर माइनस s ओवर m. एक तो ये रूट हो गया. लेट्स कॉल इट अल्फा 1, एंड अल्फा 2 जो है वो माइनस gamma ओवर 2m माइनस gamma स्क्वायर ओवर 4m स्क्वायर माइनस s ओवर m के तौर पर हम लिख सकते हैं. So based on these two roots, हमने जो equation of motion damped oscillator की define की थी, उस equation के अंदर हमने उसका जो solution propose किया था, that was x is equal to CE alpha t. That was the proposed solution. और जो equation of motion थी, that was mx double dot plus sx plus gamma x dot. That was the equation of motion. और इसका जो रूट था वो एक्स सी अल्फा टी था. अब अल्फा की दो वैल्यूज आ गई हैं, तो इसका मतलब है कि इसके दो सॉल्यूशंस होंगे. एक x1 होगा जो कि C1 E अल्फा 1 टी है, और एक होगा x2 जो कि C2, यानी इस इक्वेशन के दो रूट्स बन गए. एक अल्फा 1 है और एक अल्फा 2 है. E अल्फा 2t, and C is the corresponding amplitude of the displacement of this damped oscillator.
तो अगर ये x1 है तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो c1 है, और अगर ये अल्फा 2 है तो इसका एम्पलीट्यूड होगा c2। ओके, अब अगर हम इन दोनों रूट्स की बात करें तो हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यूज पुट कर देते हैं। x1 वुड बी c1e माइनस गैमा ओवर 2m प्लस गैमा स्क्वायर ओवर 4m स्क्वायर माइनस s ओवर m इंटू टी। एक तो ये रूट हो गया, और जो दूसरा रूट है वो होगा x2 इज इक्वल टू c1e माइनस गैमा ओवर 2m माइनस गैमा स्क्वायर ओवर 4m स्क्वायर माइनस s ओवर m t। अब दोनों सूरतों में ये जो टर्म है, दिस टर्म, ये टर्म जो है ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, या ये टर्म जीरो हो सकती है। सो इट मीन्स के ये जो डैम्प्ड ऑसिलेटर है, ये उसका जो बिहेवियर है वो ये जो अंडर रूट वाली टर्म है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब उसमें हम डिफाइन कर देते हैं कि जो गैमा ओवर 4m स्क्वायर वाली जो टर्म है, इसको हम डैम्पिंग, दिस टर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैम्पिंग, तो लेट्स कॉल इट डैम्पिंग टर्म। और s ओवर m जो है, that is the spring elasticity, it's basically spring stiffness. So s over m is responsible for oscillation, it is responsible for oscillation, and gamma square over 4m square is responsible for damping. So definitely now if damping is greater than oscillation, or damping is equal to oscillation, or oscillation is greater than damping, that is decided by these two terms and their difference present in this under root. ओके, सो अब हम इन तीनों केसेस को डिस्कस अगर करें तो इसमें अगर तो डैम्पिंग टर्म जो है, इफ द डैम्पिंग टर्म यानी कि जो डैम्पिंग टर्म है गैमा स्क्वायर ओवर 4m स्क्वायर, if it is greater than s over m, then it is no, this case is termed as heavy damping. It means that system will not be able to oscillate, maybe it will just give it a try and then it will stop. So we also call it deadbeat system. In this case, the under root term will be positive. If the damping term is equal to the stiffness term, this is critical damping. It means that still the system will not be able to oscillate. Rather, it will undergo damping after a very short time. Okay. But if the stiffness term is greater, it means that S over M is greater than gamma square over 4m square, then there will be a light damping present in the system. It means system will definitely oscillate, but it will damp after a certain time. So based on this system, we can observe that three types of dampings will appear in the damped oscillator. And out of that, let's discuss the case of light damping first. So in the case of light damping, let's discuss the case of light damping. In the case of light damping, gamma square over 4m is less than s over m. In this case, this term will be negative. So it means that the root will become complex. So alpha would be, if we look at alpha, alpha is minus gamma over 2m plus minus gamma square over 4m square minus s over m. Let's call this term to be P and let's call this term to be Q. And since it appears to be negative,
it means के इसके जो bracket sum है that would be negative. It means that iota will appear here. Alpha की दो values आ जाएंगी. One would be P plus iota Q and the other would be alpha 2 is equal to P minus iota Q. So अगर हम इनको देखें तो अब जो इसके रूट्स हैं पॉसिबल डेफिनेटली वो दो रूट्स हैं और दोनों का हम लीनियर सम ले सकते हैं. इट मींस दैट the roots can be added to give us linear summation, and we can write it like that: alpha 1 t plus c2 e alpha 2 t. So in this case we can consider c1 e p plus iota q t plus c2 e minus p, because this term is otherwise negative, क्योंकि ये अल्फा जो था वो नेगेटिव था, तो ये एक माइनस तो वैसे आ गया. माइनस आयोटा क्यू टी. ओके, माइनस यहां भी आएगा. ओके, अब हम इनको रीअरेंज कर लेते हैं. सबसे पहले तो हम एक्सपोनेंशियल जो है p और q के सेपरेट आउट कर लेते हैं. लेट्स राइट इट लाइक दैट as a product of two exponential functions. और उसमें जो हमारी रियल टर्म है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, that is e minus pt, and inside we can write iota qt plus c2 iota qt. And then we can write it in trigonometric form, that is ये जो iota qt है it would be cos qt plus iota sin qt, and this can be written as cos qt minus iota sin qt. ओके, ये जो रियल पार्ट है ये उस डैम्पिंग का जो मैग्नीट्यूड है उसको रिप्रेजेंट करता है ऑसिलेशन का. सो लेट्स जस्ट कंसिडर द सॉरी ये जो कोसाइन वाला पार्ट है, लेट्स जस्ट कंसिडर the real part of this term, this complex number. So just by considering the real part, we can write C1 cos QT plus C2 cos QT, and it can be written as C1 plus C2 cos QT. So this cos QT is an oscillatory behavior because it will show a cosine wave और जिसमें जो डैम्पिंग फैक्टर है वो E minus PT है. As you know that P is equal to gamma over 2m minus, so it would be E minus gamma over 2m C1 plus C2 cos QT. So it means that there will be a cosine wave with damping factor जो कि exponentially damp कर जाएगी. So अगर हम इसको इस graphically observe करें, so the displacement function would be a cosine wave. And that cosine wave will damp with the passage of time.
And definitely the damping is represented by this exponential function. This is E minus PT, that is the envelope, and this is the this is the negative exponential function which shows the damping in the oscillation. Okay. अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास जो सोल्यूशन आया है डिस्प्लेसमेंट फंक्शन का वो ये आया है C1 E QT। यहां से हम अगर दोबारा से इसको टेकअप करें और C1 को हम लेट्स कंसिडर C1 टू बी A over 2I E iota phi and C2 to be minus A over 2I E minus iota phi. So X would be equal to, we can rewrite it E minus PT A over 2 iota E iota phi QT minus 2I E minus iota phi minus QT. We further rearrange it. We can take A as common, and it can be E iota phi, it can be QT plus iota phi minus E minus QT plus iota phi over 2 iota. And according to trigonometry, according to complex numbers, this term represents sine function, that is sine QT plus phi. So sine phi can be written as, according to the identity, sine phi can be written as sine iota phi minus pi over 2 iota. तो ये इस आइडेंटिटी का हमने इस्तेमाल किया है और हमने we want to represent our displacement function as a function of sine. So in this case, if we want to represent it as a function of sine, we will write it E minus PT, AE minus PT sine QT plus phi. And putting the values of P and Q back, we can write it minus P is gamma over 2m into T sine gamma square over 4m minus S over m T plus phi. Again, it represents a sinusoidal function with a damping factor, जिसका maximum amplitude A है. तो अगर अब हम इसको प्लॉट करें, अब तो it would be a sine wave with amplitude A, और साइन वेव जो है वो ऐसे होगी, and this would be this is the maximum amplitude A, and this would be the damping. So this would be the damping. It means E minus gamma over 2m. This would be the damping. And the inside term is sine QT plus phi, which is
obviously Q is equal to gamma square over 4m minus S over m under the root. So this is the case of light damping, as you can see. And in this way, we see that when the damping factor is smaller and the stiffness factor is larger, system will definitely oscillate, but it will damp with the negative exponential to the power of the gamma over 2m. And after some time, damping will occur in the oscillator.